A lovely morning to all the dear students of class 6. Today we are going to have the third part of our chapter, separation of substances. In this video we are going to learn about the rest methods by which we can separate our different substances, right? First is threshing. In this picture you can see a farmer is there, and what he is doing, he is just beating the stalks of the grain. Now you may be thinking about what are the stalks first. So let me tell you, stalks are basically the stems of the grains, right? And what the process involves in the threshing is, the farmer take out the stalks, means they take out the stems of the grains, let the stem first dried off in the sunlight, and after when they get dry, they are beaten by the farmer like this, in the like they are doing in the picture. They are beating the stalks of the stem so that the seeds of the grains can get separated from the stalks, and this method is basically known as threshing. So threshing is the process of separating grains from the stalks, right? Now the second method is winnowing. What is winnowing? Let me tell you. Have you ever eaten the peanuts? That roasted peanuts. जब आपने कभी भुनी हुई मूंगफली खाई है, जब हम भुनी हुई मूंगफली खाते हैं, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, कुछ लोग पीनट का पील जो होता है उसको उतार के खाते हैं. जब आप उसको अपने हाथों में क्रश करते हैं तो उसका जो पील होता है वो ईज़िली उतर जाता है, राइट? एंड अगर आप उसको सिंपली फूंक मार के उड़ाना चाहोगे, अगर आप उसको फूंक मार के सेपरेट करना चाहोगे उसके पील से पीनट्स को, देन यू विल ईजिली कैन डू इट. आप उसको आसानी से कर सकते हैं. तो विनोइंग को आप कैसे कोरिलेट करेंगे? इसमें उन दो सब्सटेंसेस को हम सेपरेट करते हैं, जिसमें से कि एक सब्सटेंस लाइटर वेट होता है और एक सब्सटेंस हेवियर वेट का होता है. In the case of peanut, the peel is lighter weight and peanut is obviously heavier weight. So winnowing is like that. You can see winnowing is a process of separating lighter component of a mixture from the heavier ones by blowing the air through the mixture. As I have already told you कि जब हम रोस्टेड पीनट्स लेते हैं उसमें जो पीनट्स होता है वो हेवियर होता है और जो उसका पील होता है वो लाइटर होता है. तो दोनों को सेपरेट करने का जो तरीका हम अपनाते हैं, दैट इज़ नोन एज विनोइंग, राइट? नेक्स्ट इज सीविंग. ओह, दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट कॉमन. आपको सबको पता होगा, वेन एवर वी मेक द टी, वी सेपरेट द टी लीव्स एंड द टी. The mixture which we have in our cup, that is the tea, and the tea leaves, the used tea leaves are collected on the sieve. Sieve means tea strainer and tea strainer means चाय छानने वाली छन्नी, राइट? कोई भी छन्नी जो होती है जिससे हम सेपरेट करते हैं उसको हम sieve कहते हैं, राइट? एंड यू कैन सी in the sieve, bran is there and the rest particle are collected as the flour. What is bran? Have you ever heard about the choker in the atta? That choker is basically known as bran and flour is atta. So आई होप कि आपको ये मेथड भी समझ में आया होगा कि सीविंग के भी हेल्प से हम अपनी चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द डेफिनेशन. Sieving is a separation method which uses a sieve to separate the solid components of varying size found in a mixture. चाय के केस में ऐसा ही होता है. जो यूज टी लीव्स होती हैं वो सॉलिड होती है और जो टी हमारे पास होती है दैट इज़ लिक्विड. उस सॉलिड को लिक्विड, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें हमें सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट करना होता है, वहाँ पे हम सीव का यूज़ करते हैं. As you can see in the picture also, it will be clear, right? So there is one more method with me, that is sedimentation and decantation. Both these are correlated to each other, right? What has been written in the definition?
Sedimentation is the process in which insoluble heavy particles in a liquid are allowed to settle down at the bottom of a container. What he is saying? He's saying if I am having a cup of water and in that cup of water I have added some mud. मेरे पास एक फ्रेश पानी का कप है, उसमें मैंने कुछ मिट्टी ली और उसको मिक्स कर दिया. Let us consider this glass, this container. Some particles are there, right? In the same manner, अगर हम मिट्टी को मिक्स करते हैं पानी में तो मिट्टी भी इसी तरीके से नीचे बैठ जाएगी. So this method in which that insoluble particle gets settled down, जिस मेथड में ना घुलने वाला सब्सटेंस पानी में नीचे बैठ जाता है, उस मेथड को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं. और जो मटेरियल नीचे बैठ जाता है, जो इनसॉल्यूबल हेवी पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं, उसको हम सेडिमेंट कहते हैं, राइट. इसी से कोरिलेट करते हैं हम नेक्स्ट मेथड जिसका नाम है डीकेंटेशन. डीकेंटेशन में मैंने क्या किया, जो मिट्टी नीचे बैठी थी उसके अलावा जो हमारा फ्रेश वाटर, और ऑब्वियसली नॉट फ्रेश वाटर, इट विल बी कॉल्ड एज मडी वाटर, उस मडी वाटर को मैंने इस कंटेनर से टिल्ट करके दूसरे वाले कंटेनर में डाला. और मैंने क्या किया, आपको ये दिखाया, मैंने उस पानी को अलग किया और उस सेडिमेंट को अलग किया, राइट. सो दिस इज़, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस इज़ कॉल्ड sediment and this is called decant, and the process is known as decantation, right. So decantation is the process by which a clear liquid obtained after sedimentation and it is transferred into another container without disturbing the settled particle. मिट्टी के जो पार्टिकल्स नीचे बैठ चुके हैं उसको बिना डिस्टर्ब करे जब हम मडी वाटर को दूसरे कंटेनर में सेपरेट करते हैं, फिल्टर करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डीकेंटेशन, राइट. यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, क्लियर लिक्विड ऑब्टेन्ड. स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट टू टेल यू कि जिस पानी को हम दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर नहीं होगा. इट विल बी मडी वाटर, क्योंकि उसमें अभी भी कुछ मड के ऐसे फाइन पार्टिकल्स मिक्स हो चुके होंगे जिसका साइज़ बहुत ही फाइन था, जिसका साइज़ बहुत ही छोटा था और जो लाइटर था, जो ईज़िली पानी में घुल गया था, right. So these are two new methods for you, sedimentation and decantation. Now let us summarize what we have learned till yet. The separation of the components of a mixture is done to remove the undesirable and harmful components and to obtain pure and useful components. The first part is telling us that why there is a need to separate the components of a particular mixture. Some common methods of separation of the components of mixture are hand picking, threshing, winnowing, sieving. All these are the methods to separate different mixtures. Hand picking is the method which is used to separate impurities visible to the naked eye and present in the small quantity. What is naked eye? Let me tell you, naked eye means ऐसी चीज़ जो हम नॉर्मल अपनी आँखों से देख सकते हैं, that are called naked eye. Churning refers to the process of stirring the milk or curd to make the butter. I have already told you in the last video, churning simply means mixing, continuously mixing or stirring of the milk or curd so that we can separate butter and buttermilk. Next is threshing is a process of separating the grains from the stalks. I have already told you, beating of the stalks just to separate the grains, that is known as threshing. Winnowing is the method of separating the husk from the grain by blowing air through the mixture. I have given you the example of the roasted peanuts, right? And sieving is the technique of using a sieve to separate the solid particle of varying size. I have given in this sieving method also, I have given you the example of tea, right? We separate the used tea leaves and we separate the tea. And let me remind you, two more methods we have already studied about: sedimentation and decantation. So I hope
you all have got what I make you understand. This chapter is quite easy as comparison to the others. So students, will meet you in the next video. Till then, revise it very thoroughly. Thank you students.